Hello friends, I am Mansi Rawat, And I am Jyotsna Kataria. actors, theatre practitioners and members of Samagam Rangmandal. You all shared so much love to our videos. So this time we decided to do a combined character makeup video. पिछले मेकअप वीडियो में आपने हमें सराय नाटक की लक्ष्मी और रावण नाटक की रज्जो के कैरेक्टर में देखा। आज हम आगा हश्र कश्मीरी के नाटक यहूदी की लड़की द डॉटर ऑफ ज्यूज के कैरेक्टर जोना और राहिल का कैरेक्टर मेकअप करने वाले हैं। So let's get started. This play यहूदी की लड़की was written by Aga Hashra Kashmiri, also known as Indian Shakespeare, and this is one of the most played scripts in Parsi theatre. Samagam Rangmandal also plays it in Parsi style but with realism. It was picturized as well in 1933 by New Theatre Company, Calcutta. And in 1958 by Bimal Roy, starring Dilip Kumar and Meena Kumari. Let's start with hairstyle. Hair frames your face. कैरेक्टर का हेयर स्टाइल उसके टाइम, स्पेस और इथॉस के हिसाब से करते हैं। उम्र के हिसाब से भी हेयर स्टाइल चूज करते हैं। Because Rahil is a common girl, so we are giving her simple front braid. As she has to do all the works by her own, so we cannot give her heavy hairstyle. Remember, your clips should be well tight. Now it's Zona's turn. My character Zona is Princess Daisy's very close friend, and Zona herself is at royal services. So we are trying to give her an exaggerated hairstyle with a big puff and curls. Lots of bobby pins are required to keep this type of hairstyle well intact. हेयर स्टाइल को लंबे समय तक सेट रखने के लिए आप हेयर स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। बाकी की हेयर स्टाइल हम मेकअप के बाद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकअप। पहले हम रोज वाटर से फेस को हाइड्रेट करेंगे, बिकॉज हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइजर. Moisturizer does two important things. First, it smoothens the skin surface for a more even foundation and concealer application. एंड सेकेंड, मेकअप के नीचे हाइड्रेटेड स्किन से आप डल नहीं लगते। मॉइस्चराइजर के अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाने के बाद हम कंसीलिंग करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड यूज 2 shade लाइटर कंसीलर देन योर फाउंडेशन। Concealer helps to mask the open pores, blemishes and dark spots of the face. Blend it properly. Can you see the difference between our neck and face? Now we are going to apply foundation. We are using different shades of foundation as we have different skin tones. मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैंने फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिलाया है ताकि फेस केकी ना लगे। To avoid patchy foundation, you should always dab with the blender, not rub it. अब बेस को सेट करेंगे लूज पाउडर अप्लाई करके, ताकि लंबे समय तक मेकअप रहे एंड ऑल्सो इट गिव्स यू ऑयल फ्री लुक। Because my skin is oily, तो मैं ज़्यादा लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। Now I will wait for few seconds. अब ये सेटल हो चुका है, हम इसे डस्ट करेंगे। Here we are starting with Zona's eye makeup. Since the character is in royal services and the form of the play is Parsi, so we are giving the character louder and dramatic eye makeup. Also, we are trying to create some depth in the eyes. We are using glittery and golden shades and giving different colors to different part of the eye. While using so much glitters and shadows, it can fall on the cheeks, so we can clean it with the brush. We are creating the wings with the golden color.
After this, we are going to give her the winged eyeliner look. अब हम eyebrows करेंगे. We are giving arch-shaped eyebrows to Zona. Now we are going to apply kajal. आईज को और हाईलाइट करने के लिए हम वाइट कलर का आईलाइनर यूज करेंगे. फाइनली जोना's आई मेकअप इज डन. नाउ इट्स टर्न ऑफ राहिल. हम राहिल को विंग्ड आइकॉनिक आई लुक दे रहे हैं. फर्स्ट वी आर यूजिंग लाइट ब्राउन आई शेडो फॉर बेस एंड देन लिटिल डार्कर ग्लिटरी ब्राउन आई शेडो. After this, we are applying matching violet eyeshadow with her costume. Now liner for enhancing eyes. Here we are using matte liner for thicker and smooth line. हम राहिल को all around winged eyeliner look दे रहे हैं. फॉर इनोसेंट लुक हम राहिल को राउंड शेप आईब्रो देने वाले हैं. आईलैशेस को थिक और डार्क करने के लिए हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं. नाउ आफ्टर आई मेकअप वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग इज डन टू गिव शेप टू आवर फेस, ताकि हमारे फेस के फीचर्स अच्छे से दिखें. It also creates shadows on our face and gives some depth to it. Now highlighter. Highlighter is significant tool among theatre and film because artificial light gives you flat look and highlighter reflects the light and give definition to some prominent facial features like cheeks, nose, chin and jawline. Now we are going to wait for a while for the highlighter to settle down. Till then, we are completing my hairstyle. For adding a flush of color to the cheeks, we are using blush. क्योंकि राहिल और जोना दोनों ही कम उम्र की लड़कियां हैं, तो हम दोनों को पिंक ब्लश दे रहे हैं. To remove excess blush from the face, we can also use compact powder upon it, ताकि वो natural दिखे. Lip lining for shaping your lips. लिपस्टिक मेकअप का एक अटूट हिस्सा है. बिना लिपस्टिक के मेकअप कभी पूरा नहीं हो सकता. So we are giving Rahil pink lipstick for cute and innocent look. लिप्स को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए हम लिप लाइन के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करेंगे. Lipstick instantly changes the entire look of your face. It defines your lips and brightens your smile, provided you choose the correct shade. As per Zona's character, we are giving her burgundy shade lipstick with a touch of pink. Now our makeup and hairstyle are done. I'm going to change. Jewelry helps in enhancing one's beauty. It also symbolizes wealth, power and status of the person. Along with it, jewelry gives a hint about the tradition and culture of that character. कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी एक्टर का एक अटूट अंग है. You have to be very specific while choosing your costume because it gives information about historical period, geographical location and shade of the character. Rahil lives in a Jewish family, so I am wearing a tunic, overcoat, an apron and waistband.
And lastly, the most important clothing of Jewish culture, a tickle or a veil to cover your head. I'm done with my costume. Now it's Zona's turn. Costume brings confidence in actor for portraying the character with more conviction. In Parsi style theatre, everything is quite loud. So for Zona, we are giving a golden and green color gown with golden attachments and accessories. Our makeup, costume and everything is completed now. So here are some glimpses of Zona and Rahil.